Glad to have you all back. Let's pick up where we left off. Global collaboration is essential to advancing renewable energy. And with this thought, I invite Mr. Danny Song, Director of Product Center, Ryzen Energy Company Limited, to share his words with us. So can I have the presentation? Okay, before my presentation, I want to give some brief introduction of myself. My name is Danny Song. I come from Ryzen Energy from China, and our company located in the same city as Solis in the Ningbo city. It's a very beautiful city. And I come to Pakistan this is my second time to come to here. And for the speech is the first time. So I hope that I can give some introduction and also to my company and to our product and for all the person here. Huh? Not here? Huh? No? Oh, really? Maybe I can use my computer. Is it okay? Yeah, please. You have my presentation, right? Okay, that's fine. No video, just yes. Audio ना लगे? No audio. The complete screen is coming up. Ah, it's my computer. Yeah. Yeah. Okay, I think I can start. You know, in China, there is an old word to say the 好事多磨, which means that every good thing, if it happens, always with some pains.
So let's start. I will start my presentation to all of you. And maybe firstly, because a moment ago, I just gave some brief introduction of myself and Ryzen. And actually, maybe not so many people know Ryzen in Pakistan, but actually Ryzen was established since 1986. So far already a company of more than 39 years. And we come to do the solar business since 2002. So it means that for the solar PV, including the solar cell and the solar PV module, we have to focus on it for about the 23 years for the cell production, cell RD, and the module production, module RD, and sales. And also, I think it is in the 2010, Ryzen come to be a public company in the Shenzhen stock market. And since 2015, Ryzen come to be the tier 1 group of the PV module production. And in the 2018 solar, Ryzen start the best, the battery energy storage system, RD and production. So far we have already 8 years for the integration of all the system. And also in the year before last year, Ryzen storage system also come to be the tier 1. So for Ryzen, we have the PV module production. We also have the storage production. And both of these two businesses are in the tier 1 group. And also, for Ryzen, we also have lots of certification and also the branding in the globally. And for Ryzen, and I think for our PV module, our many shipment is in the China and other country, and almost abroad and domestically a 5-to-5, above this ratio. And in the Europe, in the Australia, in Brazil, is all our major market. So far, for our PV module, our shipment is already more than 100 gigawatts. And we also have a lot of branding. If we can see here, the EUPD is a global branding certification, so we get it every year for the different sales locations. And for Ryzen, we also have lots of subsidiary in the globally, and for the manufacturing, including our PV module, including our battery system, and we produce many in China domestically. And so far for our PV module, our capacity is 48 gigawatts per year, and for our battery system, our capacity is 15 gigawatt hours per year. And all these are located, for our battery, all located in Ningbo, and for PV module, we have about 10 manufacturer basements globally, including the Malaysia. And in the other country, and we also have our sales center and our technical service center globally. And also, if we're talking about the social responsibility for the ESG, Ryzen also do a lot of effort and work on it. And in the last year, for the EcoVadis, we got the Silver Award, and for the ESG ranking, and there is a ranking there, Ryzen also ranked number 2 of the whole, most of the companies, PV companies. Or maybe later, because I only have 15 minutes allowed to give the introduction. So I will, left time, I will give some introduction of the products of Ryzen. As what I just mentioned, Ryzen not only produce PV module, we also have the production and the product of the inverter and our battery system. So for all these products, Ryzen has a long time RD and manufacturing experience in the PV module. And here we list all the module products we produce here. And the most one in the left one is the AJT. I think for TOPCon, for AJT, for BC is mostly mentioned 3 technologies in the world. But Ryzen, I think, is the only one company, the top 10 company in the world who mainly focus on the AJT product. And what is the advantage of this product? I will give introduction later. And another product is the TOPCon. All the AJT and TOPCon are N-type.
If you compared all the products among the AGT, TOPCon, BC, because this is the many talked three technologies at this moment, and rather focus on the AGT technologies. For AGT, if we can see the label here, we can see that because for our AGT, so far the maximum output is 740 watts. This is not the laboratory data. This is not kind of a world record. This is a module output which Ryzen can deliver and mass production. I think it could be the maximum power, module power in the world at this moment. And another issue is that for the temperature coefficient and also the bifaciality, HGT, because of the structure of the cell is different. So including the bifaciality, including the temperature coefficient, it also has a very unique advantage for this product, and also the degradation ratio is also a good performance. And here we also have actual test data in the globally, and maybe everybody we can see the left bottom figure, and we make this site in the Saudi Arabia for almost more than 1 year. And this is the data we get from the last year. And if we compare the power generation with between the AGT module, Ryzen AGT module, and also the TOPCon module, we can see the power generation yield is about 5% at least, 5% higher than the TOPCon. So I think it will take the benefits, give the benefits, and take the advantage for our customers to get more IRR and very low LCOE. And here for this product, we can see we have a lot of projects globally. This product, we started production since 2002. And so far for this product, already the shipment volume is more than 10 gigawatts and installed in all the scenario, including the rooftop, including the utility scale, including the floating system. So every place and every scenario and every country, you can see the Ryzen AGT module. So far in the Latin area, like the Brazil, in the Spain, in Europe, and also in Australia. And this product is hot sold. I think also we have some customer here in Pakistan, and we also cooperate with them with this kind of product. And another product is our battery system. Firstly, I can introduce all this one. This one we call the utility scale used battery system. And we have three types. One is the 5 megawatt hours. And another one is the 3 megawatt hours. And another one is the 836 kilowatt hours product. All these products are liquid cooling system inside, and suitable to be used in the utility scale. But all these are the DC part. If you want to get connected with the website, with the grid, and we also have this kind of, we call the CPIC series. It's a MVSK system. And for this system, we integrated the PCS, integrated the transformer, and also the BMU inside, and to ensure this machine, together with our battery system, can be connected with the grid directly. Because all the PCS and the transformer are integrated in this machine, in this equipment, it means that all the DC to AC, AC to DC, this kind of transmission will be, the switch will be not 2 times, only 1 time, so it can save the money of the deployment and also to increase the efficiency. And here another product is our PCS, also used for here. I mentioned IEC. It means that suitable for the IEC standard. UL are suitable for the American market, and the GB is suitable for the China domestic market. So the same product, but with a different standard.
And here is our C&I used equipment of the battery system. And all these are all-in-one. It means that the battery, the PCS, EMS, and the BMS are all included in the machine. And also we have three types. One is the 251 kilowatt hours, the left one. The middle one is 232 kilowatt hours. And the right one is our another product we call the 261 kilowatt hours, the capacity. And normally the left one and the right one is hot sealed so far in China and also in the Europe. And last time I also have some talk with customer in Pakistan, and they're also interested in this kind of C&I used battery system. And here are also another product we call the switch box and the switch cabinet. We just integrated STS inside, and this machine can be used in the multi-power sourcing switch scenario. And for the left one, the switch time will be no more than 20 milliseconds. It means that if in the hospital and in some emergency place, and it will be very useful to switch the power supply source. And the right one we call the box, but the switch time a little bit higher, about longer, about 1 to 2 minutes. But the left one is very fast. And here are also all another product, one, but this also the battery system, and this also included the PCS and all the issues inside. But the advantage for this product design is all the battery are stackable. It's a modular design. We don't need to remove the whole machine like the all-in-one product. We can to disassemble the battery one by one and handle it and move it. So it will be more convenience. And for the right one is another, we also can, is a kind of cabinet for the microgrid establishment. And in the right machine, we also integrated STS, including the MPPT. We can also to get connected with the diesel generator. Even we can get connected with the wind power. So all this design is very useful for the island, for some area which the grid is not so stable and not so good. So this area, these products will be more suitable. And here is also the similar, because you know the last one, the protection level is IP20, but this one is IP65. So the similar function, but with more protection here. Also the liquid cooling system. And here is our another major product. And this is our residential used for the inverter, hybrid inverter, and also our battery system. And from the left side, you can see these are our hybrid inverter, two types. One is the 6.2 kilowatts, and another one is from the H12 kilowatts. And in the right hand, we can see that this is our residential battery system, and it is 5 kilowatt hours per machine. If you think the 5 kilowatt hours is not sufficient, we can stack them one by one until from 1 to 10. So it means that the capacity of this, we can get 5 kilowatt hours to 50 kilowatt hours. And if you think that, okay, this machine is not good to just put on the ground, I want to hang on the wall. So we have the middle one. It's also the battery system, the 5 kilowatt hours. And this is a wall-mounted type. So all these products, I think, can be used depending on the customer requirements for the residential power supply using. And by this, because you know for Horizon, we have the PV module, have the battery system, have the inverter. So actually, we also make some design and a compatible design for all these issues and to come to be a kind of kit. We call the kit. And here, we come to be the kit with the 5 kilowatt hours to the 20 kilowatt hours, and together with the different quantity of the modules and the inverters. So far we have the 6
different pack, and we can also see the solar PV kit. And for Ryzen, because I do the solar business since 2006. For me, it's also almost 20 years for me on this. And sometimes, because I also do the RD and the quality issues in the past time. So one day some guy asked me, hey, Danny, what do you think, what is the important thing for the PV module? I think, okay, the module output is important, efficiency important, but the most important thing is the reliability of the module. This is the most important thing of PV module. But for the battery system, it is the same. The safety issue is much, much important for the battery system. So for Ryzen, we control all the heat issue, heat management of our batteries from the cell level to the system level. Because the time is limited here, I cannot give the detailed introduction for all the anti-fire system, but maybe in some time I can give you more detail. But actually for Ryzen, we take the safety issue as the most important thing in all our battery system product development and production. And from the cell level to the system level, we have two very unique calculation methods integrated in our BMS software. For example, if we're talking about a normal calculation method, it looks like if we cook rice in my home, the normal calculation method only tell you, hey, Danny, your rice is cooked, is done. But for Ryzen, our calculation method, they will tell you, hey, Danny, your rice, at this moment, your rice is about 98% done. And in 30 seconds, you can close your fire. So our calculation method can give you very accuracy and clearly monitoring of the cell status of the SOC and SOH. So it can decrease the risk of the heat control and also can increase the lifetime of the battery system. And not only our utility scale use the battery system, but also our residential, we all equipped this kind of function and software because all the BMS are designed by us, by Ryzen. And furthermore, we have a state-owned national level lab. And for this lab, we do all the simulation and the test for all the components to ensure the safety issue of our battery system. So far, here are all the, not all, only part of the projects. I just take some photos to show you globally. And also we do some other kit for the residential user home kits, and also the CNI use the kits, and also together with the PV module, the inverter, and also the battery system, and also the EV charger. And another one is the utility scale used kits, and also here I just give an example in the island, and together with our PV module, our battery system, inverter, and also can be connected with a diesel generator. So all this formed to be a kind of microgrid system. And here is the topology drawing of the whole system. By this way, I think that it can be very, very easily and convenient to solve the issue of the unstable grid and the no grid issue, and can be supply the stable energy to the customer. And all the above are my presentation. So thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Song, for your insightful remarks. We have been joined by our guest speaker, Mr. Fahad, Country Director, Growatt Neo Energy. I request him to please come on the stage and be seated with the rest of the speakers. Please welcome him on the stage with a round of applause. For our next speaker, we have with us a creator who bridges digital inspiration and real-world impact.
Not only that, he is the most followed influencer of solar industry with above 1 million followers on social media. I now invite Mr. Waqas Khaliq, CEO, Smart Solar, to address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas. I'm CEO of Smart Solar. Thank you very much, Energy Update, for inviting me on stage to talk to you. And I would like to congratulate Solar Power event for organizing such a beautiful event. पिछले एक साल से सोलर एनर्जी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हुए हैं. 2024 और 25 के स्टार्ट में पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी सोलर रेवोल्यूशन आई कि हर स्टेज पे, जो चाहे कोई छोटा घर हो, बड़ा घर हो, ऑफिस हो या कोई इंडस्ट्री हो, हर शख्स ने सोलर सिस्टम लगाया और एक सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आई. और उसकी वजह से सोलर इंडस्ट्री से जो लोग रिलेटेड थे, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, जिस भी स्टेज पे थे, सबको उससे बेनिफिट हुआ. और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी लिथियम आयन रेवोल्यूशन भी आई पाकिस्तान में. तकरीबन 125 अरब रुपए से ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई. लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, बल्कि ये थी कि गवर्नमेंट ने एकदम से सोलर एनर्जी के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है. पहले जो रेवोल्यूशन आई उसकी रीज़न ये थी कि टैक्स फ्री था, टैक्स रिबेट्स थी, कोई ड्यूटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लुक्रेटिव थी. लेकिन जैसे जैसे अब ये साल हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेस का शोशा छोड़ा, उसके बाद गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग को बंद करने का शोशा छोड़ा, जिसकी वजह से कस्टमर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और लोग परेशान हैं. लोगों को ये पता नहीं है कि वो क्या करें. इसी वजह से लोग लिथियम आयन बैटरीज की तरफ भी मूव कर रहे हैं. मैं ये चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैगाम दिया जाए कि अपनी पॉलिसीज़ को क्लियर किया जाए. अगर नेट मीटरिंग बंद करनी भी है तो इसके बारे में कोई क्लियर स्टांस होना चाहिए. अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल लें तो नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड कहते हैं, वहाँ पर 2027 में नेट मीटरिंग बंद होने वाली है. लेकिन हॉलैंड की अवाम को 2024 में ही ये पता चल गया है कि वहाँ पे नेट मीटरिंग बंद हो रही है और वो अपने सिस्टम्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. उनके बिजनेसमैन, उनके इन्वेस्टर्स जिन्होंने सोलर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि अगले महीने में नेट मीटरिंग पाकिस्तान में अलाउड होगी या नहीं होगी. ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तरफ एक डिक्लाइन आ रहा है. उसकी रीजन यही है कि ना तो बिजनेसमैन को पता है, ना ही कस्टमर्स को पता है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है. तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इन तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल लेना चाहिए और यही फर्क होता है अच्छी पॉलिसीज और बुरी पॉलिसीज में. सोलर एनर्जी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसेशन आ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स आ रही हैं वो बहुत बड़ी, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ रही है. हर घर, हर ऑफिस में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जरूर आप देखेंगे अगले 2-3 सालों में, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है, फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं महंगे ज़र मुबादला को बाहर बेच के. तो अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में आएंगी, उसको हम बिजली से अगेन चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजली ऑलरेडी बहुत महंगी है. इवेंचुअली ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सोलर एनर्जी से ही चार्ज होंगी. तो जिस शख्स ने अपने पास इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है वो अपने पास लाजमंद एक सोलर सिस्टम लगाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसके पास ऑलरेडी सोलर सिस्टम लगा होगा वो अपने सिस्टम को एक्सटेंड करेगा. तो अगले 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी शिफ्ट की वजह से सोलर एनर्जी में स्टिल बहुत पोटेंशियल होगा. तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहुत सारे जो मॉर्निंग में मेरे बिजनेसमैनों से, डिफरेंट लोगों से बातचीत हुई तो सब लोग ये कह रहे थे कि सोलर एनर्जी पर रिसेशन है, एक डिप आ रही है और मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर बुरा टाइम है. मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बुरा टाइम ये नहीं है कि सोलर एनर्जी का काम नहीं चल रहा है. बुरा टाइम तो तब होता है कि आप हॉस्पिटल में चल रहे हैं, आप स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और ड्रिप लगी हुई है आपको. बुरा टाइम तब होता है कि आप बाइक पे जा रहे हैं, आपकी टांग टूट गई. बुरा टाइम तो तब होता है कि आप बैठे हुए हैं और आपके घर में फ्लड आ जाए. अगर आप एसी वाले कमरे से आए, एसी वाली गाड़ी में आए और 5 स्टार होटल में बैठे हैं तो आपसे अच्छा वक्त किसी का नहीं है. तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your truly inspiring remarks. Strategic development ensures solar energy reaches every corner.
Please welcome Mr. Faraz Muhammad Khan, Sales Strategy and Development Manager, Jinko Solar Company Limited. Assalamu alaikum. First of all, start with thanks to Energy Update for organizing such event. I think these type of events are very much helpful for growing this industry. Even like our influencer, Mr. Waqas Saab, and all team are here. I also continue these points in my presentation a little bit as well, that everyone is still concerned about this market, that this market is going to end. But in my further slide, I will discuss as well after my brief introduction of Jinko Solar. So as a name of Jinko, I think Jinko is the name all over the globe as well as in Pakistan. I think Pakistan में कोई भी ऐसा region या area ऐसा नहीं होगा या ऐसा I think मेरे ख्याल से मोहल्ला भी नहीं होगा जहाँ पे जिनको ना लगा हो. तो in everywhere in Pakistan जिनको brand एक ऐसी अब चीज़ है कि I think ये solar एक part बन गया, like a television, like a car. सोलर हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. जहाँ तक जिनको की हम बात करते हैं तो जिनको सोलर में हम ग्लोबली मोर देन 320 गीगावाट अभी तक सोल्ड कर चुके हैं, जिसमें से अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हमारा मार्केट शेयर जो है वो अराउंड 15.5% है ग्लोबली. 30 टाइम्स हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और 6 टाइम हम कंटिन्यूसली अगर देखते हैं हम टॉप रहे हैं लास्ट 6 ईयर्स में इन शिपमेंट में. दैट्स मीन कि इस वक्त बहुत सारी टॉप टीयर्स कंपनीज हैं, बहुत सारी सोलर में इस वक्त कंपनीज आ रही हैं और इवन के पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स भी आ रहे हैं. बट एक कंपनी जो कंटिन्यूस अगर 6 ईयर्स से कंटिन्यूस टॉप पोजीशन पे, तो उसके बिहाइंड कोई रीजंस हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत बड़ी R&D टीम है, उसके बैक पे सप्लाई है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. ऑन बिहाफ ऑफ डेट जो हमने ये पोजीशन ली है. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, अगर हम जो मैं बता रहा हूं कि हम 320 गीगावाट प्लस सोल्ड कर चुके हैं, दैट्स मीन कि अगर मैं इस वक्त काउंट करूं एवरी ग्लोबली 7 पैनल्स आउट ऑफ जो है एक पैनल आपको जिनको का मिलेगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है ग्लोबली, तो उस लिहाज से एज अ टॉप हम लीड कर रहे हैं. जहां तक हम प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बात करते हैं, जिनको को एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है जिसमें हम इन हाउस वेफर से लेके मॉड्यूल्स तक खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 120 गीगावाट की हमारे पास वेफर की प्रोडक्शन है फैसिलिटी है, सेल्फ 95 गीगावाट है, इंक्लूडिंग दैट मॉड्यूल्स हमारे पास 130 गीगावाट तक की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है. फैक्ट्रीज हमारे पास इस वक्त अराउंड मोर देन 11 फैक्ट्रीज हैं. विद इन चाइना हमारे पास 9 फैक्ट्रीज हैं और ग्लोबली हमारे पास 3 फैक्ट्रीज इस वक्त हैं, जिसमें से एक नई फैक्ट्री जो हमारे पास ऐड हुई है वो सऊदी अरब की है. ये कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं ग्लोबली. जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इवन के हम हर इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अवेलेबल हैं. जैसे कि अगर एक कुछ हमने शॉर्ट हाईलाइट दी है यहाँ पे कि हमारे पास चाहे कोई भी EPC हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, एवरीवेयर आपको जो है वो जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा. और एक चीज़ अगर कहीं नज़र आ रही है, दैट्स मीन कि वो लास्ट कोई मोर देन 5 ईयर्स से अगर वो इंस्टॉल्ड पैनल्स हैं और अब वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स मीन कि उन्होंने एक ट्रैक सेट किया है, उनके पास एक वारंटी सेटअप है, उनकी क्वालिटी इस लेवल की है कि उन्होंने प्रूव किया दैट्स आफ्टर दैट ये इस पोजीशन पे आज के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंटिन्यूस ऑर्डर भी हैं और हमारे पास अच्छी सेल भी है. जहाँ तक कि R&D की बात करते हैं, ऐसे जैसे कि आपको पता है कि सोलर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर बंदा आफ्टर R&D और रिसर्च के बाद जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है या एक एफिशिएंसी मीट करता है तो उसका पैटेंट भी कराता है. जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि मोर देन 30 पैटेंट्स हमारे पास हैं और इस वक्त हम लोग जो हाईएस्ट एफिशिएंसी मीट कर चुके हैं वो 34.22% है, विच इज़ टेंडम सेल. सो स्टिल अभी अगर हम बात करते हैं कि आने वाले वक्तों में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, तो स्टिल टॉपकॉन आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर भी लीडिंग पोजीशन में ही रहेगा. उसका रीज़न क्या है वो मैं आने वाली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ. अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में, लोग आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं
कि सिर्फ एक ब्लूमबर्ग एक ऐसी सर्टिफिकेशन है कि शायद कंपनी कोई ब्लूमबर्ग रजिस्टर्ड हो तो वही कंपनी टीयर 1 है, बट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवा पीवीएल, जिसमें हम कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो हम टॉप परफॉर्मर हैं और इस साल भी हम ट्रिपल ए कैटेगरी के साथ हम इसमें टॉप परफॉर्मर हैं। ये एक ऐसी कैलिफोर्निया बेस्ड थर्ड पार्टी फर्म है जो कि आपके मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। ग्लोबली जितने भी पैनल्स मैन्युफैक्चर हैं वो यहाँ पैनल्स अपने भेजते हैं और टेस्ट करवाते हैं। तो एज अगर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई एज ईपीसी फर्म्स वाले हैं या टेक्निकल पर्सन्स बैठे हैं तो वो जाके इस पोर्टल पे, ये इजी टू सर्व फॉर एनीवन है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि किन पैरामीटर्स पे, किन टेक्निकल टेस्ट के बिहाफ पे हम टॉप टीयर या टीयर 1 के अंदर जो आते हैं विद टॉप कैटेगरी, वो आपको वहां मिलेगा। इवन के टॉप बहुत सारी अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त रनिंग मार्केट में चल रही हैं, बट वो अभी भी उस कैटेगरी में फुलफिल नहीं करती। आउट ऑफ अगर हम बात करते हैं 7 टेस्ट, तो वो 7 टेस्ट पास नहीं करती है। बट जिनको एज अ टॉपकॉन एक ऐसा ब्रांड है कि टॉपकॉन को ये कह लेके शर्फ हासिल है कि हम जो है प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे भी तो आपको टेस्ट के अंदर ये चीज शो होगी कि हम ऑल टेस्ट इंक्लूडिंग हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यूवी, ऑल 7 to 8 टेस्ट आप हैं उसमें आप जाके चेक करें, हम उसमें पास करते हैं। लास्ट 11 ईयर से हम पीवा कीवीएल में अपने पैनल्स को सेंड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे मैंने बताया हम उसमें टॉप कैटेगरी में आते हैं, ट्रिपल ए कैटेगरी के अंदर। इंक्लूडिंग दिस अगर आप हमारे टॉपकॉन के पैटेंट्स भी देखते हैं तो इस वक्त हाईएस्ट पैटेंट्स हमारे पास टॉपकॉन के हैं, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के। और स्टिल लोगों के, मैं दोबारा इसको अभी बात करूंगा कि टॉपकॉन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसमें अभी बहुत सारी एडवांसमेंट आनी है। ऐसा नहीं है कि ये एडवांसमेंट खत्म हो गई, जैसे कि इस वक्त मार्केट में आप लोगों ने सुना है कि बीसी कोई नई टेक्नोलॉजी है, बट बीसी इज जस्ट अ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। सिर्फ फ्रंट बस बार को बैक पे ले गए तो वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। उन्होंने फ्रंट एरिया अपना बढ़ा के आपको एफिशिएंसी प्रूव कर दी, बट बैक एंड गेन कम कर दिया, जो कि हम अभी इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल। बट जो हमारी टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट है वो हम टॉपकॉन के अंदर एनहांसमेंट ला रहे हैं। अच्छा, ये मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा विद सोलर इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान में हम किस पोजीशन में है इस वक्त। लास्ट ईयर 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो 2024 में अराउंड हमने 4.4 गीगावाट सप्लाई किया है पाकिस्तान में सिर्फ जिनको ने, विथ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 30%। अगर हम बात करते हैं टॉप टीयर कंट्री मैन्युफैक्चरर्स को देखते हुए तो हमारा शेयर 30% था लास्ट ईयर, जिसके अंदर जो हम अगर टीयर 2 पैनल्स देखते हैं तो स्टिल मार्केट में टीयर 2 पैनल्स भी आते हैं, कुछ बी ग्रेड पैनल्स भी पॉपुलेशन है जो अराउंड 10 to 12% है, विच इज स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। और मैं जैसे कि अभी वकास साहब ने भी इस बात को हाईलाइट करी, ये फील्ड ऐसी फील्ड है कि हम एक पैनल लगाते हैं 30 ईयर्स के लिए। तो एक चीज जब 30 ईयर्स के लिए लगा रहे हैं ना, तो 30 ईयर्स का मतलब ये है कि आपको 30 ईयर्स पे उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। और हमारी इंडस्ट्रीज इस वक्त बहुत वर्किंग कर रही है, इवन कि मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें ये चाहिए कि हम गवर्नमेंट को ये भी चीज शो करें कि आप अपनी इंपोर्ट और कस्टम के अंदर भी ऐसी चीजों को हाईलाइट करें ताकि आपकी जो ये बी ग्रेड या इस तरह के पैनल्स हैं वो रुक सकें। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ 2024 में जो ये परसेंटेज थी, ये 2025 में इंक्रीज हुई है, जो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। जैसे कि हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया कि हमने अराउंड ऑलमोस्ट 16 गीगावाट सोल्ड किया है विद इन पाकिस्तान, ऑल ब्रांड्स को मिला के, जिसमें से हमारा जो शेयर था अराउंड 30% था एज अ टॉप टियर कंपनीज। 2025 को अगर हम देखते हैं तो ये साल बहुत अच्छा रहा है सोलर इंडस्ट्री के वजह से, और इस साल हमने विद इन 6 मंथ अराउंड हमने वही सेम टारगेट अचीव किया है। दैट्स मीन हम विद इन 6 मंथ जनवरी टू जून 4 गीगावाट सप्लाई कर चुके हैं। ये वो डेटा है जो ऑन ग्राउंड यानी कि पाकिस्तान में लैंड कर चुका है। 4 गीगावाट ऑफ सोलर सप्लाइड बाय जिनको विद इन 6 मंथ एंड बाय मार्केट शेयर ऑफ 42% एज अ टॉप टियर। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है पाकिस्तान के अंदर एज अ जिनको। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने कंपेटिटर्स की अगेंस्ट टॉप टियर के, तो आई थिंक अगर हम आफ्टर जिनको 3 कंपेटिटर या 4 कंपेटिटर्स को भी मिलाएंगे तो आफ्टर दैट जिनको
वो टारगेट कंप्लीट होता है. दैट्स मीन कि टोटल ऑफ 4 कंपेटिटर इज इक्विवेलेंट ऑफ जिनको ओनली 4 गीगावाट प्लस. बट अगेन मेरा इसमें पॉइंट ये हाईलाइट करूंगा, आप अगर देखें लास्ट ईयर हमारे पास जो हम टीयर 2 की बात कर रहे थे या बी ग्रेड पैनल्स की बात कर रहे थे, वो मार्केट अराउंड 10 to 12% थी. बट इस साल विद इन 6 मंथ अराउंड 19 to 20% शेयर इस मार्केट में आया है टीयर 2 और बी ग्रेड पैनल का, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अगर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के इस पे स्टेप्स नहीं लिए कि इसको रोकने के लिए या इस चीज के अगेंस्ट, तो देन हमारे पास जो सबसे बड़ा सेक्टर है अगर मैं बात करता हूं वो एग्रीकल्चर है. आज बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं कि शायद ग्रिड पे इंपैक्ट आ रहा है, बिल्कुल ग्रिड पे इंपैक्ट आ रहा है. बट जितना सोलर अगर मैं देखता हूं लास्ट 5 ईयर या 6 ईयर में आया है अराउंड 30 to 40 गीगावाट, उसमें से मोर देन 40 to 45% आपका एग्रीकल्चर में गया. और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एग्रीकल्चर आर नॉट सो एजुकेटेड. सो ये जो बी ग्रेड का पैनल है या जो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं, ये उस सेक्टर में जा रही हैं. और वो लोग बेचारे जो अपनी मेहनत मजदूरी करके एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस एनर्जी के लिए, वो मे बी पॉसिबल विद इन 1 or 2 ईयर वेस्ट हो जाए. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें इस सेक्टर को जो है बेहतर करने के लिए टीयर 2 और बी ग्रेड पैनल पे वर्किंग करनी पड़ेगी. और अगर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए एज अ मैन्युफैक्चरर, तो हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ अगेन टॉपकॉन, अगर मैं बात करता हूं अगले आने वाले 2028 तक की, तो जो आज हम लोग खड़े हुए हैं 2025 में, स्टिल जो टॉपकॉन का शेयर है मार्केट में वो 85% शेयर है. स्टिल अदर टेक्नोलॉजीज लाइक HJT and BC still it's around 10 to 12% मैक्सिमम. सो स्टिल आप ये देखें कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबली हमारे पास अगर 500 या 400 गीगावाट की मार्केट है, तो उसमें से कितना टॉपकॉन बिकेगा और कितना HJT और कितना BC, ये एक बहुत बड़ा है. क्योंकि स्टिल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ BC एंड अदर टेक्नोलॉजी इज स्टिल लेस देन द टॉपकॉन. और टॉपकॉन स्टिल प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमें इसमें कोई शक व शुबा नहीं है. स्टिल लास्ट 5 ईयर से ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स मल्टीपल है जो कि इंस्टॉल भी हुए हैं और वो प्रूफ कर रहे हैं. बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बाकी टेक्नोलॉजीज पे भी हैं. इवन कि अगर मैं बात करता हूं जिनको BC टेक्नोलॉजी आज से 3-4 साल पहले ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, बना के सप्लाई किए, बट उसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है जो कि अभी डिस्कस भी करेंगे. तो कुछ चीजें ऐसी थी कि हमने उससे स्विच किया, उस टेक्नोलॉजी पे दोबारा नहीं गए और हमने अपनी टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट करी. अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो क्वेश्चन हमारे पास है कि हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान फुल हो गया है, सोलर से फुल हो गया, अब कुछ नहीं बचा और हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, पावर प्लांट्स हमारे जो हैं वो अब शायद बिजली अब वो बंद करने पड़ेंगे. इम्पैक्ट आता है, बिल्कुल आ रहा है. बट मैं अगर डेटा देखूं, ये डेटा मैंने नेप्रा का और CESC से ही लिया है, तो इस डेटा के बिहाफ पे अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप हमारी मंथली एवरेज देखें पावर की, तो वो अराउंड 700 गीगावाट आवर से लेके जाती है, मैक्सिमम जो टच करती है वो अराउंड 1600 गीगावाट आवर तक टच करती है. दैट्स मीन अगर मैं पर डे की कंजप्शन देखूं, तो पर डे की जो मैक्सिमम पीक आई है 2024 के अंदर, वो आई है अराउंड 22 गीगावाट, जो कि अगर मैं बात करता हूं अपने इंस्टॉल कैपेसिटी की, तो उसकी आई थिंक शायद हाफ आई हो. तो नो डाउट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है या पावर हमारे पास बहुत ज्यादा इस वक्त है, बट उसका रेशियो क्या है वो अभी हम उसको भी देखते हैं. हमारे पास इस वक्त जो पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं, तो पाकिस्तान के अंदर स्टिल थर्मल जो प्लांट हैं, थर्मल प्लांट इंस्टॉल कैपेसिटी जो हमारे पास है वो अराउंड 55% है. तो सवाल ये है कि हम इन प्लांट्स के ऊपर वर्किंग क्यों नहीं करते. अच्छा, स्टिल मैं स्टार्ट में मैं अपना खुद प्रॉपर बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया. मेरा खुद 15 ईयर का एक्सपीरियंस है डीजल गैस इंजन्स के ऊपर. स्टिल अगर मैं देखता हूं ना, तो हम इसके अंदर HFO यूज कर रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स पे. स्टिल हमारे पास और रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पीछे बैकबोन पे इतना इंपैक्ट आता है और हमारी कॉस्ट बढ़ती है पावर की. स्टिल इसके कंपैरिजन में अगर हम रिन्यूएबल्स को देखते हैं तो अराउंड 12 to 13% है. तो ये जो स्टेप्स हमारे पास इस वक्त अगर हम देखें, जो स्टेप्स हमारे एक रेजिडेंशियल एरिया वाला ले रहा है, एक इंडस्ट्री वाला ले रहा है, उसूलन ये प्राइवेट बड़ी कंपनीज को ज्वाइंट वेंचर विद गवर्नमेंट के साथ IPPs बिल्ड करने चाहिए, जो कि दूसरी कंट्रीज में भी हो रहे होते हैं. तो हमारे पास स्टिल अगर हम देखते हैं ना, तो आप अब कैपेसिटी देखें तो हमें ये थर्मल प्लांट्स को बंद करना चाहिए. हाइड्रो पावर्स बढ़ा सकते हैं, रिन्यूएबल्स बढ़ा सकते हैं, न्यूक्लियर बढ़ा सकते हैं, ताकि कॉस्ट कम करें. आज हमारी इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो दूसरे तमाम हमारे नेबर कंट्रीज से हाई है.
ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बताया ना, मैं खुद मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है और मुझे पता है क्या यूनिट पड़ रहा है। लास्ट 3 साल पहले गैस का यूनिट था 850 MMBTU, आज गैस का यूनिट है अराउंड 3500 MMBTU। तो जब गैस बढ़ रही है तो पावर यूनिट उससे भी बढ़ रहा है, और हम कहते हैं कि सोलर अभी भी हमारे साथ खत्म हो रहा है। अच्छा, ये मैंने एक समरी बनाई है जस्ट के हम कंपेयर किया है डिफरेंट कंट्रीज को और उनका पर कैपिटा कि क्या सिचुएशन है। अगर मैं यूएसए की बात करता हूं, यूएसए की इस वक्त पॉपुलेशन अराउंड 345 मिलियन पॉपुलेशन है विद पर कैपिटा 12.3 मेगावाट आवर। दैट्स मीन कि उस पॉपुलेशन का हर बंदा इतनी बिजली यूटिलाइज कर रहा है इन अ ईयर। और अगर इस ग्राफ को देखता हूं तो आफ्टर दैट यूएसए के बाद जापान, चाइना, जर्मनी, इवन इंडिया 1.45 पर कैपिटा पे मेगावाट आवर पे, जबकि हम खड़े हुए हैं 0.7 पे। ऑलमोस्ट इंडिया इज डबल ऑफ पाकिस्तान। सो अभी भी अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल है ग्रोथ का। अच्छा, दूसरी बात आती है कि भाई हमें तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं, आप ये देखें कि वो इंपैक्ट आ क्यों रहा है पर कैपिटा। तो वो पर कैपिटा जो इंपैक्ट आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है लाइफ स्टाइल से। अगर आप अमेरिका की या चाइना की या इवन कि जापान की लाइफ स्टाइल देखते हैं तो जैसे कि अभी वकास भाई ने भी इसमें एक चीज पॉइंट आउट की थी कि अब ईवी कार्स आ रही हैं। ईवी कार्स के लिए आपको इन हाउस 30 to 40 वॉट मिनिमम किलो उसका वॉट का चार्जर चाहिए। अब आप चार्ज करने के लिए अगर एनर्जी की कॉस्ट को देखते हैं तो इतनी हाई है तो कोई भी उस कॉस्ट पे नहीं जाएगा। तो सिमिलर अगर मैं इन कंट्रीज की बात करता हूं तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि हर किसी के पास ईवी कार्स हैं, हर किसी के वहां पे एनवायरमेंटल चेंज इतना ज्यादा आ रहा है कि कुछ एरियाज में सर्दी ज्यादा होती है तो वहाँ हीटर्स की जरूरत है, जहाँ गर्मी ज्यादा है वहाँ एसीज की जरूरत है। तो हमारी जो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो इसीलिए अगर मैं देखता हूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है ईवी कार्स, और इवन के बहुत सारी चीजें अभी आई भी नहीं है। डेटा सेंटर्स हमारे पास सेटअप नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री स्टिल मेरा ख्याल है हाफ जो है वो रनिंग पोजीशन में। तो अगर हमारा ये कॉस्ट कम होती है, हमारी पास ऐसे नए आईपीपीस इसके सोलर के या रिन्यूएबल के आते हैं, इंक्लूडिंग विंड एंड हम सोलर की बात करें, कोई भी सोर्स हो, तो कॉस्ट कम होगी तो हम ग्रो करेंगे। आज हमसे हमें एज अ नेशन हम बहुत प्राउड फील करते हैं, बट स्टिल इंडिया और बांग्लादेश की कॉस्ट हमसे कम है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल को वहाँ बेनिफिट हो रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हमें थोड़ा सा ये चीज़ों को देखें कि हमारे पास स्टिल आने वाले 2-3 साल में भी सोलर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ अगर हम देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे, हम ये देखें कि हमारा ईयर 2023 में 114 टेरावाट आवर की टोटल ईयर का हमारे पास वो थी कंजप्शन, जो कि अराउंड 4 टेरावाट आवर कम हुई है। तो अब सवाल ये होता है कि अगर 40 हमारे पास पावर हाउसेस है, 46 गीगावाट के हमारे पास कैपेसिटी है, 40 गीगावाट लास्ट हमने कोई 4-5 साल में इंपोर्ट भी कर लिया, बट इंपैक्ट हमारे पास इतना मेजर नहीं दिख रहा। हमारे पास इंपैक्ट बहुत माइनर दिख रहा है, अराउंड 6 to 7 गीगावाट का। उसका मेजर रीजन ये है कि हमारे पास जो सोलर इस वक्त लगा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर। अराउंड 40 to 45% जो हमारे पास इस वक्त इंस्टॉलेशन है वो है एग्रीकल्चर पे, जो कि ऑफ ग्रिड था। वहां बिजली पहले ही नहीं थी, वो बेचारे पहले भी फ्यूजल फ्यूल के ऊपर थे, अब वो शिफ्ट हुए सोलर पे। तो वो एरिया तो इसमें कनेक्ट ही नहीं होता, हमारी रिफ्लेक्ट ही नहीं करता हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारे नेपरा के डॉक्यूमेंट्स में भी, क्योंकि वो सेक्टर में बिजली थी ही नहीं, वो ट्यूबवेल्स के लिए यूज कर रहे हैं। और इस वक्त अराउंड 1.2 मिलियन ट्यूबवेल सिर्फ पंजाब के अंदर है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि अगर 1.2 मिलियन पंप्स अगर हमारे पास सिर्फ पंजाब में, तो पर पंप 30 to 40 किलोवाट का सिस्टम लगता है। तो ठीक ठाक कैपेसिटी तो हमारे पास सिर्फ ट्यूबवेल्स में ही है। और पंजाब है, फिर सिंध है, फिर हमारे पास इस वक्त बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, जो कि लैंड वाइज सबसे बड़ा है, स्टिल अभी भी बहुत वहां पे कैपेसिटी इंस्टॉलेशन की अवेलेबल है, जो कि तो एग्रीकल्चर हमारा सबसे मेजर चंक है। आफ्टर दैट एग्रीकल्चर हमारे पास इंडस्ट्रीज है। तो हमें इन सेक्टर्स को सपोर्ट करना है, और आने वाले वक्तों में हमें पता है कि ये इंडस्ट्री अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, और हमारे पास ग्रोथ के बहुत सारी ऑप्शंस हैं। नाउ अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे कुलीग फैजान को, जो कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल हमारी न्यू प्रोडक्ट के हवाले से गाइड करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Faizan and I'm looking for Punjab region
from Jinko side as a business development and key account head. So I just go through our product portfolio of Jinko, and we have major two categories in which one we serve the distribution and trading segment, and the other is more focused towards project side. So in trading business, we have 575 to 600 wattage. It's more, you can say that it can be used in the residential market, agriculture sides, and there is another high rating in 600 plus wattage. We have 610 to 625 watts. And for projects, we have one our new model we have launched 3 to 4 months ago in the name of X20. It's with 20 bus bars, and its power rating is from 630 watt to 670 watt. And we have also have a high power rating of 700 plus wattages, in which currently we are producing 725 and 730 watt, and in couple of months we will achieve up to 745 watts. So this is one of our customized product, which is mostly we made for Texas market because the frequent and large scale hailstorm are experienced there. So we are just also supplying these model in Pakistan, as Pakistan is also experiencing some high hail sizes in Pakistan in a couple of months ago in Islamabad. So this model with the name of BDX, it's a high hail resistant panel, and it can withstand up to 55 mm thickness of hail ball, and it also has a fire rating class of fire class A, and its wind load and resistance is also higher. So we have also supplied this model in Pakistan market, and it's also getting famous due to some challenges of climate change. So this is our newly launched model X20 and Tiger New 3 X20. So we will achieve this rating 670 watt by end of this year or by start of very next year, and its efficiency would be 24.8%. So what we did in our new model, we didn't, as Faraz told, that there are a lot of technologies are developing in Pakistan, like back contact and HJT and some other technologies. But we just stay with the most reliable, the most efficient technology of TOPCon, and while remaining in the TOPCon segment, we achieved the maximum efficiency of the industry with our advanced metallization enhancement feature. So what we did in ME, we reduced our contact resistance, and we reduced the silver content, and it's less than 1%. And also after reducing the silver content, and we also encapsulated our tiling, so what we have achieved due to low contact resistance, we have increased the efficiency of our every solar cell by 0.5%. And we have also done, it's very important that Faraz mentioned about the PVEL. PVEL is a reliability testing platform. So what we do, we don't just focus on the IEC standard, because you all know that IEC is very basic standard. If we have a calculator in office, it's IEC certified. If we have a toy in our homes for some childs, it's also IEC certified. So IEC is very basic certification. So what we do for the reliability testing, and we put our all criteria into 3 times of the IEC standard, and we test all our new technologies and panels of 3 times of the IEC testing. So in our new model, we have achieved high yield, high generation, and high IRR, and its superior power, it's with 670 watt and 24.8% efficiency. So with novel metallization enhancement and the full passivation, we have achieved the 1% efficiency, and we have also increased our number of bus bars in this model. From 16 to we have increased to 20 bus bar. So with 20 bus bar design, we have also increased our mechanical strength, as well as the you can say the electrons flow. We have made it more smoother and more fast. So we have achieved the module power more than 5 to 15 watt.
So this is Jinko Solar bus bar development. 2020 we had 3 bus bars, and then we keep them increasing, and now we are offering 20 bus bar in our latest models. So with our new model and with our advanced feature, what we have achieved with metallization design, we have increased the efficiency of each cell by 4 to 5 watts. And as I told you that we have increased the number of bus bars, so the stress is more evenly distributed on the cell, because if you are aware about the cell strength, the cell thickness is only 150 or 160 microns. So it's very fragile. So when we increase the number of bus bars, so it has given the significant strength to cell, which minimize the hidden cracks in our cell as well. So as I told you that we have also reduced the silver content, and we have incorporated a UV encapsulant which gives us the higher, which helps us to minimize the high temperature hotspots, low bus bar failures, and its efficiency degradation is also reduced. So as far as the comparison is concerned with other technologies being offered in Pakistan and globally, so first of all, as Faraz earlier mentioned, that we didn't adopt it back contact, because it was a very easy approach that you just put all the bus bar on the back side and just increase the front side efficiency. So what we did, we stayed in the top con and increased our efficiency with ME with 20 BB. So our first benefit with the back contact is the high bifaciality factor. If you see all the panels in the back contact technology, they have reduced their bifacial factor with 10 to 15%, which ultimately results their energy generation by 2%. So our first benefit with the BC is the high bifaciality factor. So the second advantage is our low light performance. As maybe most of you heard about that the back contact panel are operating as an anti-shading feature. So what they claim that when the front side cell is shaded, the surface resistance of the cell increases and the voltage rises. So their cell becomes the bypass and they block the single cell, and this feature you can say is realized as anti-shading. But when the field testing was done, so it was observed that when the cell is shaded and its back contact, so what cell behaved, its shunt resistance basically reduced. So when shunt resistance is reduced, its leakage current increases. So back contact panels in the field, they produce less output in the low light irradiation, because in that time period, like from 6 a.m. to 9 a.m. and after 3 p.m. to 6 p.m., in these 6 hours, back contact panels, due to this anti-shading feature, so-called anti-shading feature, their shunt resistance reduces and the leakage current increases. That's why the top con panel perform much better in the low light performance. As if EPCs are here, or some design field people are here, they can understand that even in the industrial projects, they calculate no shading calculation from 9 to 3. So this is the second advantage of top con panels over the BC, that it will perform much better in the low light performance. So our third advantage over BC is that as our bus bar is on both side, and on the back contact panel, the bus bar is on the only back side. So the single-sided metallization of BC, it produces the uneven stress on the both side of the solar cell, because it's only having the bus bar on the one side. And due to the thermal expansion and contraction, this uneven stress becomes more pronounced, and it's more, you can say, the increasing the cell crack, micro cracks in the future. And the fourth advantage is our operating temperature. As we have the bus bar on the front side in top con, and we have achieved the front side efficiency as equivalent to back contact. So
we have the bus bar on the front side. I mean to say that we have a metal component on the front side along with the cells. So when all the temperature hits on the front side, some of the part, like you can say 20%, 25% of the temperature is absorbed by the bus bars, and the and the remaining part of the temperature is bear by the cells. So in back contact, if you don't have the bus bar on the front side, then all the temperature from the front side needs to be bear by the solar cells. So that is the reason that the back contact solar cell temperature is much higher than the top con solar cell, and that's also reduce the power generation in the BC. So all these advantages I have explained. People obviously claim that these are theoretically or logically, obviously they are acceptable. But what we did, we get these issues from lab to field. And so we say that don't just read about the data sheet. Real world performance is what counts for the Tiger Neo. So we have physically installed our top con panels along with the back contact and HJT panels in almost different atmosphere in the whole world. So, and at every site we have incorporated a third party testing laboratory, so they can witness the performance and they can provide us the results with this certification. So in this graph you can see in New Mexico, TUV Rinald, Italy, TUV Nord, Saudi SGS, and Qatar, the Qatar environmental industry was there for the third-party inspection. So I just show you a couple of results and studies. So almost everywhere where we have placed N-type top con, our Jinko N-type top con and back contact panel, almost every site up to 1.5% to almost 3%, top con panels has performed the better performance than the BC. So this is our one of the project in Doha, Qatar, where it's a very interesting case study in which the Qatar Environment Ministry and Solar ABAC, they were also engaged. It's a gigawatt project scale, and Jinko top con panels are installed there, another brand top con panels are installed there, and one HJT panels are installed there. So despite having the lower temperature coefficient in HJT, Jinko has performed the better maximum with production, and at second number the second company TopCon performed better, and the HJT has performed in the third place. So we will also share the detail of this project as well. So this is another study with top con and back contact. It's in China, Henan province. The feature of the location was high temperature and high radiation, and almost more than 5% gain has been received on the top con panel. The third party study was the SCGS here. So these are our mega references in major sectors of Pakistan. As Faraz told you that almost in every street till every industry, large scale industry, Jinko is the most famous, most reliable product in the industry. And if I just mention our major references in the cement industry, we have almost covered more than 70% market share in the cement industry with some of the very large scale installations. In Garibwal cement, more than 24 megawatt, Shirat cement 22 megawatt, Fauji cement 20 megawatt. And in textile sector, we have also the most reliable and the most adopted panel in the textile sector as well. And with the Fazal cloth, we have 41 megawatt, Kohinoor textile 17 megawatt, Al-Karam textile 15 megawatt, and majority of these orders are repeated orders because they are well satisfied with the performance, with the reliability, with the results of our solar modules. And same is with the steel industry. We have also the major references like Frontier Foundry FF Steel, almost 20 megawatt, and Navina Steel, more than 7 megawatt. So this is the project pictures of Fauji cement, 20 megawatt. It's a very
state-of-the-art project, and they are very satisfied with the reliability of the panels. And this is the Cohort Cement 10 megawatt project. And these are some of our global references. In UAE, it's a 2.1 gigawatt project. And in China, 4 gigawatt, Vietnam. And one last thing I would like to explain you, that we can even allow our customers to install our regular normal panel on the offshore applications, because we always use the excellent and the most reliable component in our solar products. So that's why, this is another offshore application of 1.32 gigawatt on the offshore applications. So that's all from our side, and we also very thankful once again to Energy Update, PAE, PSA, all the organizing committee to conduct such an event, and thank you very much. Thank you so much, Mr. Faraz and Mr. Fizan, for your valuable presentation. Technology is the backbone of progress in the solar industry. And to elaborate further and talk with us, I welcome Engineer Mia Fahad, Country Director, Growatt Neo Energy, to share his words with us. Please welcome him on the stage with a great round of applause. I welcome Engineer Mia Fahad, Country Director, Growatt Neo Energy, to address the audience. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us today. Okay, once again, a very warm welcome on behalf of the Growatt, and thank you very much for being with us today. It has been always a pleasure. We're working with the Energy Update. Thank you very much, Naim Saab, for creating the opportunities like this. For and on behalf of Growatt, we welcome everyone in this venue. Once again, you have been very generous to us, taking out of your time of your key appointments, assignments, and tasks. So getting on to what we are, who we are, all of us in this industry might be familiar with the Growatt, who we are. I respect my competitors, my industry colleagues very much. What I have noticed that some of the things which we are already aware of is being explained, elaborated in a very theoretical manner. I own that very much, and since the audience is getting restless for the lunch as well, so we need to take care of that opportunities. So I make it a little bit crisp, short, and focused. So let's go on. So the Growatt has been founded in 2011 with the vision and the philosophy of to build the largest intelligent sustainable energy platform, of course for the humankind as well as for the ecosystem. So we launched a 5 kilowatt inverter which received the AA Proton Lab rating in our first year of the foundation. In 2015, we launched the residential energy storage solutions. 18, we launched residential off-grid and microgrid storage solution. 2020, we have launched the smart home management solution named as Grow Home.
2013, we established our subsidiaries in UK and US. In 2017, we were ranked among top 10 inverter suppliers. 19, we launched a microgrid solutions with 2.5 kilowatt to 6 kilowatt XH inverters, offering the battery-ready solution. By the way, this was the first time that any inverter suppliers had provided the battery-ready solutions. 2021, we have established a state-of-the-art advanced manufacturing facility in Hoizhou. 2022, that was the red dot winner. I will elaborate this later on. But what we have provided in this year to the world is portable energy solutions, a portable energy bank. 2023, we have produced the state-of-the-art and our own patent solution WIT series. So let's talk about the insights of what we are doing right now. The PV inverter shipment of about 3.8 million plus until now. A storage capacity of 700,000 in each shipment. Cloud users of more than 4.9 million. 3.8 million annual production capacity. More than 200 countries plus presence globally. 4,400 plus employees placed in the remote areas all over the world. 1,100 plus R&D engineers. And the total revenue is being shared for about 8.6% of the total revenue for the R&D. The global leading distribution energy, where we stand. In my supposition, this award has been based on the performance of 2024. We, including all of our competitors, our partners in the market, has done fabulously well in 2024. We had been number 1 in this residential sector, number 2 in global inverter shipments, number 2 in the commercial and industrial capacity. So let's talk about the recognitions we have got. Of course, we have got one of the highest and the most prestigious rating EUPD, as well as for Pakistan. Over my left, you can see that we are also rated in Pakistan for the EU EPD for 2024. Sustainable investment in R&D and what brings business to breakouts. Again, 1,100 plus R&D engineers, 8.6% of the total revenue is being invested in this. 187 plus patents, what we have got, which is the highest number in any inverter organization has got until now. 2014, we have got the Photon Lab rating, AA, this is the highest one. 2018, TUVX Award. 2020, PV Magazine Award. Again, 2020, TUV Award for the highest quality award. 2021, the Solar Power World top product in US. 2022, PV Magazine Award. Discussing the state-of-the-art manufacturing plant which we have raised in 2022, the annual capacity is more than 3.8 million inverters and 400,000 battery bank capacities. Highly automated assembly line with 5-6 quality control. The human interference is as much less as you can expect. These are the global presences over here, with 89 representative offices all across the world, and the product being installed in more than 200 countries. Inverters are not limited to any of the capacities for residential, commercial, or industrial scale. We are phenomenally well doing in all the categories, especially in the storage segment as well. When we talk about the residential capacity, it started off with the microinverters, leading up to the 3-phase inverters with 600 watt to 15 kilowatt energy, integrated with type 2 SPD and AFCI protection and fuseless technology.
Online remote monitoring, of course, it brings all of them, and MVP and string monitoring as well. CNI and utility scale products are also available, starting with 15 kilowatt in the commercial and industrial sector, up to 150 kilowatt low voltage. Utility, if you talk about the large scale gigawatts and megawatt projects, we are equipped with 185 kilowatt to 350 kilowatt high voltage. Again with IV curve scan, one-click diagnosis and online remote support. Multiple MPPT, higher ratio of DC and AC, support bifacial modules as well. Our friend from the Genco will appreciate that. Okay, anyway. Energy storage solutions, where we have just got one of the highest rating and phenomenally doing very well in this specific niche segment. It is what we are bringing up to the world, informing the latest of the latest technologies, the state-of-the-art designs, the highest number of installations all across the world. Residential energy storage solutions starting with 2.5 kilowatt to 11.4 kilowatt energy with the battery ready storage, single phase, three phase, high voltage batteries, low voltage batteries, and again ARC batteries, which is the latest and the most useful for any of the systems. Residential microgrid storage solution products, single phase IP2021, single phase IP65, three phase IP65, and low voltage batteries. CNI energy storage solutions come with the three categories. Number one is the three-phase hybrid, high voltage battery solutions, all-in-one systems as well. Portable power stations, which has been awarded the Red Dot, which is the highest and most recognized in this category. We had the patent of this, and we are the pioneers in this matter. Balcony is the new in the market. We have bring up this to the world as well. The balcony solutions come with a very small and portable solutions that you can employ in any of the high-rise buildings, at your balconies, in the apartment living style. Multifunction excellence and the generator port integrated, it is that the multiple dual output. In my experience of about 13, 14 years of the renewable energy, I must say that I have only noticed this dual output technology which is being used only in Pakistan. Anywhere in the world I have not recognized this, I have not heard about this, but unfortunately some of our partners in the market has exploited it up with a dual output buzzword. So since we also had been jumped into this dual output buzzword possessing from last 1 year now. So what we provide in the smart energy solutions, since now it is already the talk of the town that EV chargers, EV cars, soon we have a favorable energy policy as well. Wakasa will put his words and his thoughts over this. I know he's very busy, but thank you very much for taking your time out of this. And I believe that your attention is all on my presentation as well. So now what we are discussing about the EVs, please do not forget us in recognizing, in recalling us, especially my humble opinion in writing down the new policies for the EV. We had been working very hard in this segment, and what we have done already is like we have installed few of the prototypes with notable segments in the fuel and energy sector, not limited to the KLI, but also into the remote areas of Pakistan. So we comes with the industrial scale and residential scale of the EV chargers available.
As far as the sport is concerned, we had been providing one of the top-notch sport in the world. If we talk about Pakistan, we are available in Karachi, Lahore, Islamabad. We are operational after-sales service centers, a team of about 54 engineers and multiple technicians, supervisors, logistics team as well. We have partnered with one of the top leading logistics services in Pakistan that is ensuring free of cost pick up and deliver inverters at your premises. Smart energy management we call about smart energy monitoring and maintenance, smart homes and smart facilities. What we bring it to this is like smart scheduling by AI-powered energy assistance. Day-like dynamic electricity price adjustment automation, flexible export limitation control of the negative electricity price, customized tax rate, and AI intelligent mode. When we talk about GrowWatt, we are not just providing the inverters for the world, we are providing the ecosystem that it evolves around. The ecosystem that impacts and had benefit to all of the users, to all of the surroundings, and to the mankind. So it's not just an application that we have in our phone. We can have this, utilize this in a very optimized way. And what is that is integrating all the equipments with one application, especially for the GrowWatt family. If it is the EV charger, Grow Boost, EV inverters, storage inverters, and battery solutions, Grow Home Manager is one of the things that can manage all of these in one click, in one application. You don't need to jump or hover into multiple applications for this. We provide an ecosystem and we own it. So let's have the insight of the company's philosophy, what it is, and who we are, and where we come from. Our progress and prosperity. But with natural resources dwindling and ecosystem damaged, what lies ahead for us all? To blaze a trail towards a sustainable future, GrowWatt delves into unlocking the full potential of renewable energy for you and me, making energy smarter and the future greener. We bring innovations to propel clean energy revolution and pave the way for an eco-friendly future. We make the most of every beam of sunlight by developing all-scenario solutions to decarbonize our ways of living. We illuminate homes and enable everyone to share the joy and benefit from sustainable energy. We create possibilities for sustainable development, facilitate smart energy management for optimal energy use and cost management. By engineering reliable, powerful, and intelligent energy solutions, we deliver secure power supplies for homes, businesses, and communities. We are dedicated to building the world's largest, intelligent, sustainable energy ecosystem for all humans. We hold ourselves to comprehensive and strict engineering and quality control standards by implementing the 5-step quality engineering system from product design to manufacturing. For every product we deliver, it's a business success story unfolding. In this journey of unceasing exploration, we craft meaningful products and solutions for everyone in the green community. Together with our global partners, we shoulder the responsibility to create a green and sustainable future for generations to come. While unlocking the potential of our global workforce to innovate and contribute,
We strengthen our capability and make bold moves to protect our planet. It's our vision, our mission to shape a greener world and a better future. Thank you very much, gentlemen. Once again, closing notes, it's our mission to have a better future for all over the world, for the human beings, and for our ecosystem around us. Thank you very much. Thank you so much, sir. Policy support is crucial for accelerating solar adoption. And to share his vision, I request Mr. Faizan Ali Shah, Member, Prime Minister Solarization Committee, to address the audience. Sir, please grace the stage with your presence and share your words with us. Good afternoon, Assalamu alaikum to all the audience. सबसे पहले तो मैं नईम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा एनर्जी अपडेट का, उनकी टीम का. They've always been instrumental in promotion of renewable energy, and whether it is solar, whether it is wind, whether it is any other technology. नईम साहब का और हमारा साथ काफ़ी पुराना चलता है, और नईम साहब एक पायनियर हैं रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोशन इन पाकिस्तान में. तो नईम साहब, मेरी दिल की अथाह गहराइयों से आप मुबारकबाद कबूल करें और अल्लाह ताला आपको और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए. So as the topic of today is solar, so I think from the government's perspective मैं थोड़े से कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूँगा सोलर की, जो कि मैंने अभी नोट की थी. कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ चैलेंजेस हैं सोलर से, और फिर ऑब्वियसली कुछ फ्यूचर का जो वे फॉरवर्ड है आगे हम जो देख रहे हैं वो क्या हो सकता है सोलर का, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किस हद तक कैसे इवॉल्व हो रही हैं इन ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट. तो जब तक पॉजिटिव जो सोलर की जो बात है, इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, वी कम टू नो कि सोलर की जो एडवांटेजेस हैं दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर्स. ठीक है, सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही एडवांटेज नहीं है, इट्स ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की एडवांटेजेस इस तरीके से है कि बहुत सारे जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स किसी ज़माने में हमें लगाने पड़ते थे टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, और उसके लिए बहुत सारे फाइनेंसेस और उसके लिए बहुत सारे आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ता था. 4 से 5 साल तो इजीली कोई भी ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट या जनरेशन प्रोजेक्ट ले लेता था. तो उसके अब बरक्स हुआ ये है कि सोलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर रिलेटिवली ईजियर टू इंस्टॉल एंड क्विकर टू इंस्टॉल. उनमें जो तकरीबन टाइम पीरियड्स हैं वो 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप 100 मेगावाट 200 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स, और इनफैक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल के सोलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आप इससे भी कम 2 से 4 महीने 6 महीने में कर सकते हैं. और यही वजह है कि अब आप नोट करेंगे कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस सालों में जो समर के पीरियड्स के दौरान इतनी एजिटेशन आवाम की नहीं होती लोड शेडिंग के हवाले से या एनर्जी शॉर्टेज के हवाले से, जो आज से कुछ 4-5 साल या 6 साल या 10 साल जब हम पीछे चलते हैं तो होती थी. तो सोलर का जहाँ ड्रॉबैक्स हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हैं. इसी तरीके से अभी एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो गवादर या गिलगित के जो सॉल्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिक हदायत दी हुई है कि आपने गवादर के केस में और गिलगित के केस में जहां एनर्जी इनएक्सेसिबल है, जहां हमारी ट्रांसमिशन लाइंस या जनरेटर पावर प्लांट्स नहीं है, वहां उसका क्विक रेमेडी या क्विक जो सोल्यूशन है वो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्रपोजिंग सोलराइजेशन ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंट ग्रिड स्टेशंस. इसी तरीके से गवादर के केस में भी, गिलगित बल्तिस्तान के केस में भी 100 मेगावाट का भी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, और वहाँ डिफरेंट जगहों पे व्हाट वी आर डूइंग इज अभी हम सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके फिर ये सोलराइजेशन डिफरेंट उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी की जाएंगी, जहाँ उनकी भी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं वो पूरे किए जाएंगे. तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज. जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ ऑब्वियसली इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं. चैलेंजेस की जहाँ बात करें वो 2-3 किस्म के चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल भी हैं, टेक्निकल भी हैं. फाइनेंशियल की अगर बात करें गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से अगर आप सोचें तो हमारे तकरीबन 40 मिलियन कंज्यूमर्स हैं ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं. उन 40 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स में से
तकरीबन 18 मिलियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि लाइफलाइन कंज्यूमर हैं, जो 200 यूनिट से कम कंज्यूम कर रहे हैं। उन 200 यूनिट से कम कंज्यूम करने का मकसद ये है कि अब गवर्नमेंट को उनका बोझ उठाना पड़ता है, उनको सब्सिडी देनी पड़ती है। और आप हैरान रहेंगे कि ये जो 18 से 20 मिलियन लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, ये 2023 में या 2022 में सिर्फ 11 मिलियन थे। ये 2 से 3 सालों में 11 मिलियन से 18 से 19 मिलियन पे आ गई है। मतलब 7 मिलियन कंज्यूमर ऐसा है जो लाइफलाइन कंज्यूमर में चला गया, जो 200 यूनिट से कम कंजम्पशन कर रहा है इस वक्त बिजली की। तो ऐसा क्या हुआ कि कंज्यूमर जो हैं वो लाइफलाइन कंज्यूमर बन गए हैं। तो इसका जो मेजर इसके कंट्रीब्यूटर है वो सोलर है। जो सिंगल फेज कंज्यूमर्स हैं वो अपनी सोलराइजेशन कर रहे हैं, और जो उनकी पहले कंजम्पशन 400 यूनिट्स थी, 600 यूनिट्स थी, वो अपनी उन कंजम्पशंस को नेट ऑफ करके 200 यूनिट से कम चले गए हैं। एक तो उनको वहाँ फ़ायदा हो रहा है, प्लस उनका वो जो 200 यूनिट का रेट है दैट इज़ सब्सिडाइज्ड। तो गवर्नमेंट को इवेंचुअली क्या करना पड़ रहा है, ये सब्सिडी इंक्रीज करनी पड़ रही है, जो कि पिछले सालों में तकरीबन अगर 70 से 75 अरब थी, अब गोइंग फॉरवर्ड ये तकरीबन 300 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, दिस इज ड्यू टू सोलराइजेशन। अब ये एक ड्रॉबैक आप कह लें या इसका बेनिफिट कह लें, बट नॉनदलेस ये गवर्नमेंट को एक चैलेंज है और ये आगे रहेगा, और इसको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट केटर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से टेक्निकल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, जो कि वो मैं खैर बहुत सारे लोग तो इस वक्त उससे अवेयर हैं, जिसमें रिवर्स पावर फ्लोज हैं, वोल्टेज स्वेल्स हैं, आपकी जितनी आपकी इस वक्त नेट मीटरिंग की जो रेगुलेशन है वो इस तरह की है कि वो इनकरेज करती है कि आप मैक्सिमम रिवर्स पावर फीडबैक करें और रात के टाइम फिर आप उसको वापस लें। तो ये भी एक टेक्निकल इश्यूज हैं सोलर से रिलेटेड। और बट गोइंग फॉरवर्ड जो फ्यूचर है, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, राइट। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ नेट मीटरिंग की रेगुलेशन ही चेंज कर रही है और नेट मीटरिंग को डिस्करेज कर रही है, और शायद वो लोड ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही या इंडस्ट्रीज को ग्रिड पे लेकर आने की कोशिश नहीं कर रही। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको थोड़े से मेजर्स बता दूं जो कि फैसिलिटेट करेंगे सोलर की इंडस्ट्री को इन फ्यूचर, प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को भी इन फ्यूचर। और गवर्नमेंट सिर्फ नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस को ही नहीं चेंज कर रही, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स का एजेंडा है जो गवर्नमेंट कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो अभी गवर्नमेंट ने कैप्टिव जो पावर प्लांट्स है जो अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं गैस से, उसके ऊपर गैस कैप्टिव गैस लेवी का एक एक्ट निकाला है। तो उनको जो गैस मिल रही है उसके ऊपर उनके स्पेशल एक लेवी लगी है, जिसकी वजह से उनकी गैस एक्सपेंसिव हो गई है। जब गैस एक्सपेंसिव हुई है तो वो जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है वो वापस ग्रिड पे शिफ्ट हो गए हैं, और लास्ट क्वार्टर में कुछ 600 से 800 मेगावाट लोड ग्रिड का इन्हांस हुआ है। ये लोड इन्हांस होने की वजह से आपकी जो कैपेसिटी प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, आपका नेगेटिव फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट्स आई हैं, और ग्रिड की हेल्दीनेस बढ़ी है। और ऑब्वियसली जब लोड आएगा आपके पास तो उसके अगेंस्ट ही आप सोलराइजेशन भी कर सकेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, और ये नेपरा ने भी एक्नॉलेज की है। और गोइंग फॉरवर्ड तकरीबन 583 हमारे पास कैप्टिव इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से 60% हो गई हैं, और कुछ मजीद जब होंगी शिफ्ट ग्रिड पे तो आप देखिएगा लोड और आ जाएगा, और देन सोलराइजेशन भी उसी तरीके से मजीद बढ़ेगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने CTBCM का भी एक इनिशिएटिव है, उसमें ये है कि गवर्नमेंट नाउ अलाउज, तकरीबन अभी ओपन नहीं हुआ बट इन 1.5 month ये होपफुली ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी एंक्शियसली एंड वेरी एग्रेसिवली ऑन दिस। वंस इट इज़ ओपन तो होता ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट pusher of the solarization. The industries which are fully they have installed their rooftop solar, उनके अपनी rooftop fully utilize होगी हुई है, they will get a chance कि वो किसी भी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लें XYZ जो कि 10, 15, 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है उनकी प्रेमिसेस से, तो वो उनके साथ एग्रीमेंट्स करके और एनर्जी व्हील करके सस्ती बिजली ले लेगा। आप सस्ती बिजली आप सबको पता है कौन सी है, दैट इज सोलर एनर्जी, राइट। तो अगर मेरी एक इंडस्ट्री है, मेरे पास 8 मेगावाट लगाने की जगह थी, मेरा लोड 20 मेगावाट है, तो मैंने 12 मेगावाट मजीद मुझे कहीं ना कहीं से चाहिए। वो 12 मेगावाट मैं किसी भी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर लूँगा विच इज़ लोकेटेड XYZ एनीवेयर इन द कंट्री, उसके साथ मैं एग्रीमेंट कर लूँगा, एंड वो प्रॉबली सोलर एनर्जी ही होगी, क्योंकि 12 रुपये 12.5 रुपये के हिसाब से व्हीलिंग चार्ज है, उसके ऊपर आप 10 रुपये सोलर एनर्जी का लगाएं, 22 से 25 रुपये की आपको बिजली पड़ेगी, जो कि इस वक्त इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जो इंडस्ट्रियल का जो यूनिट है वो तकरीबन 32 से 35 रुपये का है।
तो ये भी जब जैसे ही वो CTBCM इनिशिएटिव लॉन्च हो जाता है 1-1.5 महीने में, तो आप देखिएगा कि ये इट विल गिव अ बिग पुश टू सोलराइजेशन। इसके अलावा जो कैप्टिव शिफ्ट की जो बात हो रही है, जो मैंने अभी आपको कहा, जैसे ही इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है तो इंडस्ट्रीज आर कंप्लेनिंग कि हमारी जो ग्रिड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी वीक है, उसमें ट्रिपिंग्स आ रही हैं, उसमें शॉर्ट टर्म 2-4 सेकंड के लिए ट्रिप आता है और फिर वो निकल जाता है ट्रिप और वापस होता है। लेकिन उस प्रोसेस में टेक्सटाइल्स वालों को या और जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत सारा इशू आता है। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए a lot of industries are now referring to the battery energy storage system in the VSG mode. तो वो battery energy storage systems का जो push है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसी वजह से आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कैप्टिव लेवी लगा के जो कैप्टिव पावर प्लांट्स वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रिड पे लेकर आई हैं। तो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक बिजनेस आपको फील होता है, ऑल्दो मेरे नज़दीक तो सोलर का बिजनेस कम नहीं हो रहा, बट इफ़ यू फील कि यार सोलर का बिजनेस हमारा कम हो रहा है या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू वुड सी कि दूसरा बिजनेस जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का है वो चाहे इंडस्ट्रियल लेवल का है चाहे वो रेजिडेंशियल लेवल का है, यू वुड फील कि वो काफ़ी खातिर ख्वाह तरक्की इस वक्त कर रहा है। एंड जितने भी आप मार्केट में देखें कोई 50 के करीब तो वेंडर्स आ चुके हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आ गए हैं। वो ऐसे ही नहीं आए, उनको पता है कि मार्केट इसमें पाकिस्तान में इस वक्त बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की है, वो इसीलिए आए। तो विदाउट taking any much further time, the last line I would just like to say is that एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर ख़त्म हो रही होती है तो दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हो रही होती है। You just need to be vigilant, you just need to be active, and the government is working on all these sort of issues to create a balance between the consumers and the business of vendors and all these stakeholders which are connected to the grid. So in the end, thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Now, as a gesture of gratitude, we will now proceed with the distribution of mementos to our distinguished speakers and sponsors. For that, I request you once again, Sir Mr. Fizan Ali Shah, to grace the stage and distribute the mementos to our distinguished speakers. Please receive your mementos as I call your name. Mr. Hamza Sajid, Mr. Mubarak Hussain Mir. Please give them a great round of applause. I now invite our next speaker, Mr. Mubarak Hussain Mir, to receive his memento from Mr. Fizan Ali Shah. Mr. Dani Song, please receive your memento. Muhammad Khan. Muhammad Waqas Khaliq. Engineer Mia Fahad. We once again thank all our distinguished speakers for sharing their insights with the audience today. I request you all to once again join us on the stage for a group photo.
All our respected speakers are requested to join us on the stage for a group photo. Beats made this. All our respected speakers are requested to join us on the stage for a group photo. Mr. Hamza Sajid, Mr. Mubarak Hussain Mir, Mr. Danny Song, Mr. Faraz Muhammad Khan, Muhammad Waqas Khaliq, Engineer Mia Fahad. We once again thank all our distinguished speakers for gracing us with their presence today. Beats made this. Mr. Fazan Ali Shah, I request you to please stay on the stage and also distribute the mementos to our respected sponsors. Please. I request Mr. Waqas Khaliq, CEO, Mr. Waqas Musa, Chairman Pakistan Solar Association, to grace the stage with his presence and distribute the mementos to our distinguished sponsors. The representatives are requested to please come on the stage and receive their mementos as I call their name. Solace Inverters. The representatives from the respective organizations are requested to please come on the stage and receive their mementos. Solace Inverters. Huawei International Company Limited. Huawei International Company Limited. Jinko Solar Company Limited. Growup New Energy Technology Company Limited. Ryzen Energy Company Limited. Beats made this. Solax Power Network Technology Company Limited. Inverex Solar Energy. I request all the representatives to please come on the stage from the right side and leave the stage from the left side for our convenience. Thank you. Jollywood Solar Technology Company Limited. Beats made this. Unique Private Limited.
Apex Power Network Technology Company Limited. Baham Global. Beats made this. Nippon Energy. Inverex Solar Energy. Zunic Private Limited. Baham Global. Beats made this. Nippon Energy. Shanghai Pites Energy. Diwan International Private Limited. Beats made this. True Solar Private Limited. I request representative from Diwan International Private Limited to please come on the stage and receive their mementos. True Solar Private Limited. Progressive Ventures. Progressive Ventures. Sun Life Solar Private Limited. BS Engineering and Construction Works. Dynast Digital Energy Technology Company Limited. Diwan International Private Limited. Beats made this. Dynast Digital Energy Technology Company Limited. Pakistan. We are deeply grateful to all our valued sponsors and industry partners whose contributions have made this event possible. अस्सलाम वालेकुम। यूनिक एनर्जी की जानिब से कुछ लकी ड्रॉज हैं, मैं नाम अनाउंस करता हूँ। ऑक्सफोर्ड से हैं ज़ैनब बासिल साहिबा। ज़ैनब बासिल साहिबा ऑक्सफोर्ड से। ये ट्रू
ट्रू सोलर से हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल्ला। Hallelujah Beats made this. पीएसए से हैं जनाब आगा मेहदी हैदर साहब। पाकिस्तान केबल से हैं जनाब कासिमुज़्ज़मा बाजवा साहब। कासिमुज़्ज़मा बाजवा साहब, पाकिस्तान केबल। मुबारक हो सर। उनको ले एमएम पाकिस्तान से हैं हैदर जावेद साहब। हैदर जावेद साहब एमएम पाकिस्तान। Hallelujah Beats made this. आप सबको बहुत बहुत मुबारक। All representatives of the sponsors are requested to come again once on the stage for a group photo. The representatives from all our sponsor companies are requested to join us on the stage for a group photo. I request Mr. Salim Khan Saab from Excite Battery to please grace the stage with his presence. Our event is sponsored by Solace, Huawei International Company Limited, Jinko Solar Company Limited, Grow Up New Energy Technology, Ryzen Energy Company Limited, Solax Power Network Technology Company Limited, Inverex Solar Energy, Jollywood Solar Technology Company Limited, Zionic Private Limited, Baham Global, Nippon Energy, Shanghai Pirates Energy, Diwan International Private Limited, True Solar Private Limited, Progressive Ventures, Sun Life Solar Private Limited, BS Engineering and Construction Works, Dynas Digital Energy Technology Company Limited, and MM Pakistan. We are deeply grateful to all our valued sponsors and industry partners for their valuable contributions. Thank you so much, everyone. Kindly be seated. We are pleased to share that during this I request everyone to kindly be seated. We are pleased to share that during this conclave, an important signing ceremony will take place. The Memorandum of Understanding with Ryzen Energy. I invite you all to witness this milestone moment. I request Mr. Tony from Ryzen Energy to come on the stage, Mr. Syed Arsalan Ali from Ryzen,
Mr. Mia Kadir, Director Earthcon Engineering, to please grace the stage with his presence. I once again recall your name. Mr. Tony from Ryzen Energy, please come on the stage. Mr. Syed Arsalan Ali from Ryzen. Mr. Mia Kadir, Director Earthcon Engineering. Booyah Beats made this. I request Engineer Muhammad Nawaz Khan, Director Futex Engineering Services, to please grace the stage with his presence for this memorandum of understanding. Booyah Beats made this. With this, we conclude the first session. Please join us for lunch and prayers. The program will resume promptly at 2 p.m. Thank you. ठीक है